योगी सूरजनाथ, गुरु बुधनाथ जी, गोरख सबदी, द sayings of Gorakhnath. Sabdi number 268. सकति अहेड़ मिसरिध को सबल शु बागो, गोरख कहे चालती मारू, कान गुरु तो लागो. Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. Power is hunting, hoping for riddhis or riches. Keeping my distance, I rebel. Gorakh says, I will conquer this deceiver and pay heed to the Guru. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. साधना, ध्यान ज्ञान की साधना तृष्णा विचार की समझ के साथ तृष्णा विचार से मुक्तता की बात है. दुनियादारी के लिए तृष्णा विचार का यथावश्यक उपयोग करें. आंतरिक रूप से तृष्णा विचार से मुक्तता, यानी कि किसी रिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए साधना करने की बात, वो साधना तृष्णागामिता होती है, विचारगामिता होती है, कालगामिता होती है. वो ध्यान ज्ञान की सम्यक साधना नहीं होती. तो पहली बात यह है कि साधना यह किसी रिद्धि सिद्धि की आस के साथ, तृष्णा के साथ नहीं, मगर साधना करते हुए कोई सिद्धि, कोई रिद्धि सिद्धि, दूर का श्रवण होना, कोई आने का पहले ही हमें पता चलना, कोई अच्छी बुरी घटना आसपास में घटनी है तो उसका भी पता चलना. इस तरह की छोटी मोटी सिद्धियाँ रिद्धियाँ जाग सकती है, आ सकती है, मगर गोरखनाथ उस बाबत सतर्क करते हैं. ऐसी रिद्धि सिद्धि, कोई अकम्प्लिशिंग पावर, मिरेकुलस साइकिक पावर जग भी जाए, आ भी जाए, तो उसको महत्व नहीं देना है, उसका तिरस्कार भी नहीं करना, उसको दबाने की भी कोशिश नहीं करना, और उसमें मतलब उसमें आसक्त नहीं होना. उसको समझना कि हाँ, ये भी भाव पावना है, ये तृष्णा है, ये तो इस तरह की भाव पावना मुझे महसूस होती है, और उसके बारे में मन की प्रतिसाद भी मुझे महसूस होते हैं. तो शक्ति आए रहे ना रहे, वो हमारे हाथ में कुछ बात होती है, कुछ नहीं होती है. शक्ति अपने आप में कोई बुरी बात है ऐसी बात नहीं, मगर उसमें बहना कालगामिता होती है, कालांत नहीं, काल का अंत नहीं. सो काल का अंत जो दुख निर्वाण की बात है, दुख निर्जरा की बात है, वो ज़रूरी है. जीवन में जीवन सीख की और जीवन में गहराने की बात है, वो ज़रूरी है. और उसको वो बात सिद्धियों पर डिपेंड नहीं होती, सिद्धियों पर अवलंबित नहीं होती. बिल्कुल सिद्धियाँ उसमें बाधा बन सकती है, या सिद्धि आकर के आ भी जाए, रहा है भी अंदर में, तो उसमें उसकी जगह उनकी रिस्पेक्ट है, उसमें बहना नहीं, उसमें आसक्ति नहीं. कभी उस थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए, उस बाबत आसक्ति आ भी जाए, तो उसको देखना है, गलती स्वीकार करना है. सादी बात है. कोई आदर्श की बात, मैं बहुत बड़ा ऐसा है, मैं जाऊंगा ही नहीं, ये वो तो फालतू की बातें होती हैं. ज़मीनी रहना है, जो हकीकत आती भीतर से, उसे देखते जानते जीते जाना है. ध्यान ज्ञान से उसे साफ करते जाना है. किसी आदर्श में नहीं जीना, आइडियल में, तो फिर वो रास्ता कालगामिता ही चलेगा. आदर्श की मनमुखी ही चलेगी, वो मेमोरी से, रिकॉर्ड से होती है. किसी आदर्श स्थिति की बात होती है, वो फिर आपका आत्मा परमात्मा हो सकता है, पता नहीं अल्लाह का हम क्या क्या हो, या जीवन गति में अपने आप को दिखाने की, बनाने की, दिखाने की बातें हो. सारी कालगामिता है, तृष्णा विचार है. ये बड़ा शून्यता का काम है, ये बधिरता का काम नहीं, ये शून्यता का काम है. और ये इसमें सेंसिटिविटी, संवेदन क्षमता होती है, साथ में सेंसिबिलिटी भी होती है, एक विवेक होता है. सो गोरख कहते हैं कि ऐसी कोई सिद्धि आती है तो मैं कोस बल से बड़ा, एक कोस का 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रख करके मैं रिबेल हो जाता हूँ, बागी हो जाता हूँ. इस तरह के साधी शब्दों में गोरख सीधे कहते हैं, बागी हो जाता हूँ. गोरख कहे चालती मारू, ये जो चालती है, ये जो ट्रिक है, ये जो डिसीविंग है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं पहचान लेता हूँ, उसको मैं जड़ से हटा देता हूँ. खान गुरु तो लागो, और इसमें गुरु मतलब कोई अथॉरिटी या डिपेंडेंसी नहीं. गोरखनाथ गुरुडम को नकार देते हैं, जड़ से नकार देते हैं. अधिक तत्ते गुरु बोली बाही न तत्ते चेला, मन माने तो संगी रमो, नहीं तो रमो अकेला. रहता हमारे गुरु बोलिए, हम रहता का चेला, मन मारे तो संगी रमे, फिरे नहीं तो फिरे अकेला. इस तरह से कई शब्दियों में, सारे थ्रू आउट शब्दी में गोरख का पूरा, गुरु का पूरा सम्मान है. क्योंकि गुरु मुख से ही, मनुष्य के भीतर से ही ध्यान ज्ञान की बात, सद्धर्म की बात
चेतन रहती है। अलग विज्ञान की बात, अलग संज्ञान, अनित्य बोध और बोधि की जगने की बात। मनुष्य कुछ जीवंत प्रवाह से ही जीवन चेतन रहने की एक सहजता होती है। सो ऐसे गुरु, ऐसा स्कूल, सिद्धा बुद्ध जैसे स्कूल चलते रहे और उसमें ऐसे ध्यानी ज्ञानी साधु जगते रहे, ताकि बहुजनों के लिए, जन जन के लिए ये ध्यान ज्ञान की बात, जीवन सीख की बात सहज रूप से चेतन रहे। जैसे कोई मेडिकल इंजीनियरिंग अच्छे से सब्जेक्ट्स चेतन रखना है तो उसके भी स्कूल मेंटेन करने पड़ते, चलाने पड़ते, सपोर्टिंग करनी पड़ती है। इस तरह से ये लाइफ की लर्निंग के जो जीवन सीख के स्कूल है, इसको भी सपोर्टिंग। और इसमें गुरु का जीवंत गुरु का महत्व है, मगर गुरु कोई आधिकारिकता नहीं, अवलंबन नहीं तो फिर तो गए, फिर तो गुरुडम बन गया। नहीं, गुरुडम की बात गोरख बिल्कुल गोरख गुरुडम सीधा नकार देते हैं। और अल्टीमेटली अभी और यहाँ, अंतिम रूप से मतलब अभी और यहाँ जो तत्व है, जो सत है, वो गुरु है। यथाभूत सत आसती छय वो पंडिता नासती नाही, पटीज इज द वे वो पंडित नॉट नटीज। जो सत जग है, भीतर बाहर गतिमान है, उसको देखने में ही बोधि जगती है और बोधि ही गुरु होती है, गुरु तत्व है। और बोधि के जगने में ही काल का अवधूलन है। सो यथाभूत सत्य के प्रति अलग संज्ञान, सो नित्य बोध, सु दर्शनी होना, कुशलता के साथ दर्शनी होना, सांस के साथ हो, इसके वेदना के ऊर्ध्वष्ट मध्यबिंद वेदना के साथ। भाव पावना की भाषा विश्व भाषा है, शब्द चित्रों की भाषा अनेक है। साधना के नाम पर आप कितनी ही बातें खोज लो, कितनी ही बातें खोज लो, मगर जीवन सीख के लिए आपको मन की किताब पढ़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और मन की किताब भाव पवना की बात है, भाव पवना की गति है। और भाव पवना की गति को देखने की कुशलता अपनी कुदरतन है, तो उसे समझे और बारीकी के साथ समझ करके गंभीरता के साथ चले। कोई यहाँ वेदना नहीं मिलती तो सांस मिलता है, या यहाँ जो जगह है ये, इसमें सारा मन फोकस हो जाता है, सारी इंद्रिय आसपास में है, और सारा शरीर से, सिर से, शरीर से, पेट से, सगे कण कण से जो भाव पवना अग्नि कुंठित हुई है, दबी हुई है, रिकॉर्ड हुई है, संस्कार बनी हुई है, पर्दा दर पर्दा उबल रही है, वो जोर से उबलना शुरू हो जाएगी। उसी के प्रति कुशलता के साथ दर्शनी बने सहज निर्जरा शुरू होती जाएगी। खान गुरु तो लागू। Some explanation in English. So in this Sabadi, this is very important Sabdi, that the sadhana, this practice with understanding, theoretical, philosophical understanding, grounded philosophy, not some imaginary philosophy, grounded philosophy of Alakh Niranjan Avadhu, of Shil Samadhi Panyam, and that way doing sadhana with understanding theoretically and doing it actually within the body mind, so that sadhana is being done with understanding of thought and desire, its limit and its place in day-to-day life. So with freedom from thought, that is freedom from thought and desire, freedom from time, presence of the mind with skill and diligence, the sadhana is being done. That is observation of what is within. Understand, this learning of life, there is no other way. You may design any ideologies, theories and ways, but all remain in time. To understand, to learn to learn the life, learning life per se demands us that we learn about our consciousness, the stream of consciousness in its flow, in its movement, without ideal, through direct observation. And for the observation of the stream of the consciousness, this body-mind is the field which is related with life movement in and around. So this body-mind is the field, and with skill and diligence we need to focus within it, maybe with breathing, maybe the sensation, or if you don't get this sensation, maybe here in this with skill, whatever you feel, remain with this, maybe here, whatever, so that you are directly catching this hold of this essence of sensations, feelings, the stream, the essence of the stream of consciousness sums up in the facial expressions, and you are holding it right within then and there, and so the stream is being caught, and you will start
the boiling of feeling sensations from within, from stomach, from chest, from head, from necks, from hands, and every cell of the body mind, every part, every cell of the body mind will start boiling easily and naturally, and there is not this touch of desire and thought, but the touch of observation. The thing, all the stream is being observed with skill, with diligence, and that way it's not becoming but emptying. Sustained and serious work is bound to show you, reveal you the things, and that observation is Guru, truth is Guru, and this learning of life per se. There are subject physics, chemistry, engineering, medicine, etc. We need to keep that fields, that schools also living, so that they are good for humanity. They are useful for us in our day-to-day life. But this learning of life per se, the learning of life in itself, for that there is no field, no school other than, no field other than this body-mind complex. And this is not in ideas, not in beliefs, not in traditions, ideologies, no. But the stream is flowing, moving every time, changing. So the observation of the stream of the life through within mostly, which is related with life around. So that way, observing it within oneself with skill and diligence, that way it is not only observing and learning of life, but since there is no touch of desire to the stream, but it is being observed, the stream is being observed with skill and diligence, that way the action of observation from beyond desire and thought, from beyond causation, emptying, the ending of time, the emptying of consciousness, unburdening, regenerating, nirvana. That way, this is kept living through these living gurus, living persons. So living persons or gurus, let us say, have their place, but it is not to depend on any living person either. They are a great help to get understanding, and that way we have to, and then we have to work on our own, which is not ego matter, but understanding this limit of thought and time, freedom from thought and time, that is the Alaksens, insight into this change and impermanence, that is Anitya Bodh, and that way observing the stream with skill and diligence, maybe with breathing, maybe with this ever vibrating sensation. If you don't get this sensation instantly, then maybe be aware of anything that is happening within this complex, so that you are holding this very, because sensations, feelings, whatever they are, the stream of mind sums up itself into the face, in the form of feelings, and that way when you are within that, holding to this part, then you are actually holding or observing the feelings that is coming up in the face, and that way the whole of this stuff, this meat of the body, sensations, feeling, tensions, whatever, anger, fear, they are start boiling up, being pulled up automatically, naturally, and we are feeling then, and then since there is no touch of desire to it, if desire comes up, we note and observe desire, that this is desire, okay, and then that it too is a feeling. So observation of each and every feeling is meditation. They say that observation of each and every thought is meditation, but no, by observing thought, words and pictures, we remain very shallow, and that way there is mostly chasing up thoughts, chasing up words and pictures, movement, chasing up the movement of time. No, that way meditation is fatigue, that is burdening. That way meditation is not easy and naturally. Observation of every thought also means observation of each and every feeling that comes up with skill and diligence. So that way expressions, feelings sum up in the face, and this is within this complex, naturally some important complex within the body mind. Face is important for the feelings, expressions of feelings, and these lips are more important than the face, because this is a physical, this is nature's structure. We have to understand it. This is not a matter of techniques. Technique is always matter of thought. Presence is no technique can touch presence. Presence can use whatever things, mechanism is there, understand it, and by living the very presence, the understanding the matter of time and freedom from time,
thought, and that way coming to presence and skillfully, diligently, it knows any technique. It could be focused through any mechanism, it could be focused to any part, inner, within or around, but presence is no technique. Presence can use thought and techniques, but presence is no technique. So when it is said that there is no technique to meditation, this is absolutely right. There is no technique to come unto meditation. There is no way to come unto presence. Presence is the way, and there is no way to come unto presence. And presence can use thought. When I intend to be focused here in the breathing, or here or somewhere as per needs, this is presence is using thought. Presence is using a technique, let us say. So there is no technique to come to the presence. There is no way to come to the presence, and presence is the way. This is absolutely right. And whether Jiddu Krishnamurti says it or whoever says it, we have to understand it. And it says, Jiddu says that, oh no, this is technique, don't. So this is just a technique, and this is not meditation. Dear Jiddu, or whoever you advocate of Jiddu, so-called advocate, so-called intellectual following to Jiddu, not understanding Jiddu J. Krishnamurti, tell that can thought come unto the presence? Can thought anyway have potential to come unto the presence? No, thought is time matter. It could slow down, speed up, slow down, or suspend to itself. It has no power, no potential to come unto and live in the present. Presence is no time, no thought, no technique. So insight into the limit of thought and time, so the elections, insight into impermanence, that everything is changing, that is anittabodh, and to live the presence with skill and diligence is not a matter of any technique. It is beyond technique, beyond thought and time, and it can use thought and time as needed. So to come to the sabdi, sadhana is not done for accomplishing any riddhis or siddhis or miraculous powers, psychic powers, no. But in the course of sadhana, psychic powers may come up. So not to suppress them, not to hate them. If they come, let they come, but don't be, if my attachment comes towards them, attachment arises towards them in my mind, I note it. So that is rebelling. In a way, Gorakh says, I rebel from the keeping my distance, I rebel. May that accomplishing that siddhi, that psychic power come and flower within, but we don't suppress it, we don't become victim to it and try to show ourselves, that is ego and ego center, boosting ego center, going into desire and time, so that freedom from desire and time, even if accomplishing is there, we are free from that, we keep our distance from that, and even if it is there some naturally, no sadhana for that, but it has come up somehow, all right, it is there, I keep my distance with that, and I'm engaged with sadhana of observation and emptying of the consciousness, layers after layers, I keep my distance. Gorakh says, I will conquer this deceiver of falling prey to power, psychic powers, and that I will not fall prey to these powers. I will conquer this deceiver. I will not go into that. I will not suppress that. I will not avoid that. I am free from that, and I am observing life in its stream, and that way deepening into life and learning life through emptying and through emptying and unburdening it actually, and pay heed to the Guru. So the Guru is not authority and dependence. Some persons are good, but it is not to depend on them. And we have to see whether somebody speaks, says something, it is right or wrong. It is our responsibility to see, to look, and to discern, and then understanding it, and to do sadhana once within, without depending for any psychological power, any shaktipat or borrowed energy. No. Understanding is intelligence, not ego matter, that way. And through understanding only can be a master unto oneself, right understanding of the self. So that way, truth is the Guru, Tattva is Guru, and truth as it is, whatever we feel, observing that moment to moment in its flowing, changing stream, so that it is right observation is the ending of the stream, not becoming, but ending of the stream, layers after layers.